The national leader visit will further advance and foster friendly ties between our two countries. We have agreed to intensify our joint efforts to further expand and deepen our bilateral cooperation, including in political, economic, and defense domains. We have specially deliberated upon ways to develop closer economic engagement in the priority areas of trade and investment, energy, connectivity, and information technology. I have invited the Foreign Minister's attention to Pakistan's investment climate and special role of SIFC, the Special Investment Facilitation Council, in facilitating foreign investors to invest in different sectors. We look forward to welcome Turkmen companies to benefit from prominent investment, climate, and opportunities in Pakistan. Pakistan's seaports offer the business communities of our two countries to explore win-win opportunities. We welcome businesses and enterprises in Turkmenistan to avail the Gwadar and Karachi seaports for trade connectivity with the Middle East, Africa, and beyond. In our meeting today, we also reviewed progress on the TAPI, the gas pipeline, as well as the TAP electricity transmission line projects. These projects offer enormous opportunities for our region and our two countries. We have also reiterated our commitment to enhance the volume of bilateral trade and to make it commensurate with its true potential and existing ties between the two countries. We all work together on trade diversification, early finalization of transit trade agreement, and instituting a liberal visa policy to facilitate greater contacts between businessmen of the two countries. We have also decided to promote bilateral parliamentary interactions and enhance cultural exchanges, educational scholarships, and people-to-people contacts. Pakistan values constructive cooperation with Turkmenistan in the framework of international and regional organizations. We will enhance cooperation and dialogue in the multilateral settings, including at the United Nations, Economic Cooperation Organization, and Organization of Islamic Cooperation, OIC. In our discussions today on the regional and global developments, I briefed my brother Excellency on the dismal situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. A durable peace in South Asia remains contingent upon the peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and as per the aspirations of the Kashmiri people. Excellency, I thank you wholeheartedly for the message of friendship and brotherhood that you have brought with you. We wish you and your delegation a very fruitful, productive, and pleasant trip to Pakistan. Thank you, Excellency. Thank you very much, Your Excellency, dear representatives of the media, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the Turkmen delegation, I would like to extend my sincere gratitude to His Excellency Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Ishaq Dar, and to all our Pakistani friends and partners. We are deeply appreciative of your warm hospitality, the excellent arrangements make for our visit, and the productive environment you have created for our joint endeavors. Productive discussions were held today between the co-chairs of joint
Turkmen-Pakistani Intergovernmental Commission on Economic Cooperation, and during the third round of political consultations between Turkmenistan and the Islamic Republic of Pakistan. These meetings fostered a wide-ranging exchange of views on key areas of our bilateral relationship, including political and diplomatic ties, trade, economic cooperation, cultural exchange, and humanitarian efforts. Both sides identified promising avenues for further collaboration. The constructive and substantive nature of the discussions underscored and the long-standing tradition of mutual trust, openness, and understanding that characterizes Turkmen-Pakistani relations. Turkmenistan and Pakistan are connected by traditional, historical, and ties of friendship. Pakistan is one of the important partners of our country in the world. I mentioned about it during today's consultations, which shares mutual understanding on almost all issues of regional and global importance. Relations with the Islamic Republic of Pakistan are one of the priority areas of Turkmenistan's foreign policy. In this context, the main factor in the development of Turkmen-Pakistani relations is the open, trusting, and friendly dialogue that has been developed at the highest state level. Our discussions also addressed the potential for high-level visits between our nations. This reflects the deep ties of friendship and unwavering support that have characterized the Turkmen-Pakistani relationship since our independence. We are particularly grateful for Pakistan's consistent support of Turkmenistan's neutrality and our international initiatives across various forums. In the field of international relations, our states carry out joint cooperation on the basis of close mutual support. Turkmenistan and Pakistan constantly support each other within the framework of major international organizations, primarily the United Nations. We also discussed in detail implementation of the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, TAPI, transnational gas pipeline project, power transmission lines, and fiber optic communications along the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan route. Both sides agreed that to make joint efforts to bring these large-scale projects to implementation is a cornerstone of Turkmen-Pakistani trade and economic cooperation. Our discussions reaffirmed our shared commitment and unwavering resolve to collaborate on the practical implementation of these initiatives. This will not only strengthen the bonds between our fraternal peoples, but also exemplify the mutually beneficial partnership that defines the essence and content of our bilateral relations. Transport emerged as a key area for enhanced Turkmen-Pakistani cooperation. Leveraging our respective strengths, we can jointly develop modern infrastructure along east, west, and north-south corridors. In this context, we agreed to maintain an active dialogue on creating international transport rules that capitalize on the transit potential of both Turkmenistan and Pakistan. Furthermore, to broaden our bilateral cooperation in humanitarian sphere, we engaged in detailed discussions on fostering closer ties in science, education, and cultural exchange.
The Turkmen delegation leaves deeply impressed by the outcomes of this visit and the fruitful negotiations. Our collaboration with Pakistan is firmly set on a future-oriented course with a steady growth envisioned across all dimensions. This not only aligns with the mutual interests of both nations, but also serves as a significant driver for positive regional and international developments, promoting enduring peace, stability, and economic prosperity in Asia. In conclusion, I would like to convey to the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Ishaq Dar, my wishes for further success in his responsible government and diplomatic activities. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Excellencies. This will conclude our media session, and we will request the two leaders to go to the banquet hall, please. Thank you. तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान आमद पर इस्तकबाल का शुक्रगुजार हूँ। और अब आपको बताएं कि कराची में हॉक्सबे के समंदर में नहाने के दौरान 8 अफराद डूब गए, 2 जाँ बहक हो गए, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने 6 को बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, डूबने वालों की हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए हॉक्सबे हमारे के मकाम पर 8 अफराद डूबने की इदारे जो है वो हरकत में है और तमाम अफराद बचाने के लिए वो सब की मदद की गई और 8 अफराद को निकाल दिया गया है, जिन्हें सिकंदराबाद के लिए मरोड़ा हमारी अस्पताल मुंतकिल किया, जिसमें से 2 अफराद जाबाक हो गए। इसमें एक खातून जिनकी शनाख्त नौरीन शेरा के नाम से हुई है जाबाक हुई है, जबकि राशिद वल नामालूम 40 साल ये भी जाबाक हुए हैं, जबकि बाकी अफराद को तिब इमदाद फराहम की जा रही है, जिनकी शनाख्त जो है देब, सूबिया और असमा के नाम से कर ली गई है। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि ये लियाकताबाद के रिहायशी हैं और ये जो है हॉक्सबे के मकाम पर नहा रहे थे कि इस दौरान जो है ये अफराद डूबे थे। इन्हें बचाने की कोशिश रज़ाकारों की जानिब से की गई और इन तमाम अफराद को निकाल तो लिया गया था। जब अस्पताल मुंतकिल किया गया और 2 अफराद जो है वो दौरान रास्ते दम तोड़ गए, जिनकी शनाख्त हो चुकी है और ये तमाम तर अफराद जो है वो लियाकताबाद के रिहायशी बताए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल अपडेट करने के लिए। लाहौर पुलिस की टीम पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन के हमरा अडियाला जेल पहुंच गई है। लाहौर पुलिस टीम बानी चेयरमैन से 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात करेगी। आपको बताएं कि बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए जाएंगे। लाहौर पुलिस की टीम पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन के हमरा अडियाला जेल पहुंच गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। जी ताहिर, बताइएगा कौन से टेस्ट किए जाएंगे? जी देखिए, लाहौर की पुलिस सेंट्रल जेल अडियाला पहुंच चुकी है। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन भी मौजूद है। PFSA के आबिद अयूब इंस्पेक्टर वकास खालिद भी अडियाला जेल के अंदर रवाना हो चुके हैं। PFSA माहिरीन बानी चेयरमैन के पुलिस पोलोग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करेंगे। लाहौर पुलिस टीम DSP जुवेद की सरबराही में भी सेंट्रल जेल अडियाला पहुंच चुकी है। इंस्पेक्टर राना अकमल, राना अरहम, आलम लंगड़ियार, राना मुनीर, मोहम्मद अली भी अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। लाहौर पुलिस टीम बानी चेयरमैन PTI से 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात करेगी, जबकि जो फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी के माहिरीन पहुंचे हैं वो मुख्तलिफ टेस्ट करेंगे, जिसमें फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, वॉइस मैचिंग टेस्ट है। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन समेत दीगर से बानी PTI पर दर्ज 12 मुकदमात और इल्जामात की तफसीलात तलब कर ली हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल को कल तलब कर लिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बानी PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI पर दर्ज मुकदमात और इल्जामात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी कल जो है वो तलब कर लिया है और उनसे तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। जो बानी PTI के वकील हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के वक्त उनका फिजिकली
अदालत में पेश किया जाना जरूरी था, लेकिन उन्हें फिजिकली पेश नहीं किया गया और उसके बावजूद ATC की जानिब से उनका रिमांड मंजूर किया गया। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख इब्राहिम में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की 12 दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें उनका यह मौकफ था कि ATC के जज ने गैर कानूनी तौर पर उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, इस जिस्मानी रिमांड को करादम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों को इब्तदाई समाअत के बाद कार्रवाई के लिए मंजूर कर लिया है और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं और कल बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात और इल्जामात की जो तफसीलात है वो भी तलब कर ली हैं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल अपडेट करने के लिए। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ मुहिम PTM, BLA और TTP जैसी तंजीमें चला रही हैं। फवाद चौधरी ने लिखा कि डिजिटल दहशतगर्दी का PTI के मुंसलिक अकाउंट से बहुत कम ताल्लुक है। नामालूम अकाउंट्स PTI के नाम के टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर ने दावा किया कि PTI को कुर्बानी का बकरा बनाया गया ताकि ऐसा माहौल बनाया जाए कि अवाम और फौज मद्दे मुकाबिल हैं। बानी PTI कभी इन एजेंडों की हिमायत नहीं करेंगे। थरकोल पावर प्रोजेक्ट में गलत मकाम पर बिजली के खंभे लगाने पर मंसूबे को पानी फराहम करने वाली कंपनी ने एतराज उठा दिया। कुवैती कंपनी ने महकमा आबपाशी को खत लिख दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, खत के मंदरजात क्या हैं? जी, थरकोल पावर प्रोजेक्ट को पानी की फराहमी करने वाली कंपनी ने एतराज किया है। ये कुवैती कंपनी है जिसने एतराज किया है। उनका ये कहना है कि ये जो खंभे हैं इससे कबल मुश्तरका सर्वे किया गया था और जिसमें बिजली के खंभे को पाइपलाइन से दूर लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन हेस्को के खंभे सही मकाम पर नहीं है। इनको मद्देनजर रखते हुए नए खंभे लगाए जा रहे हैं और पानी की पाइपलाइन के साथ बिजली के खंभे लगाना मुनासिब नहीं है। बनी सड़क और विंझार तक 11 मकामात पर बिजली के खंभे लगाए जाएंगे और हेस्को का किसी दूसरे दफ्तर से कहा जाए कि मुश्तरका सर्वे कराएं। बिजली की फराहमी को करने वाली जो कंपनी है उसका ये कहना है कि जो खंभे हैं उस आइंदा ये नुकसानदेह